This is my first attempt to have a podcast with anyone, and Riten was the first person who come up, and I have got a chance to have a podcast with him. This video is really going to, you can say, an insightful video, because this video we have talked with Riten about his journey, how he had made Fueler. He first built KIWISMEDIA, then transfer it to Fueler. And if you ask me what is Fueler, Fueler is in one liner. It will fuel your journey with opportunities. Now let's get straight into the video. This is my first attempt, so I have tried my best to speak in English. Since my English is not very good, I have tried my best. I hope this video will really give you some value. If it is, then give it a thumb up. Don't forget to comment below, and do share this video with your friends, and subscribe my channel for support. I am Mishra. Let's begin the video. Since you have a startup named Fueler, Yeah. so the tagline, which is proof of work. So I have a question: how you get the idea of proof of work? You can say like my whole career is based on proof of work, so I started my freelancing journey right after my college, so during my college also I started freelancing, so in that way you can say like I have my work published on different platforms, in that way I've got so much of inbound leads, so I understood the reason it was just because of proof of work, so when you have your work at place and people can relate to it, especially the brand owners, they can see, hey, like yeah, this is something I need for my company, so they reach out to you, that is the power of proof of work. So it opens, say, doors for you, so yeah, that is when we thought, let's make it a mainstream thing, so whenever someone is lending opportunities, so this proof of work thing is going to be there, and is going to help someone, skip the wait list. So yeah, this is how the proof of work works. Yeah. So actually, I want to know, what was your previous journey? So you have told me that you have done some freelancing work. So I want to know, what was your previous journey? How was your college days and how was your school days? Since I was not a very good student, I was an average student. So I want to know that. Right. So like you want my like a journey from the college, or like what exactly you want to do? Since I have just completed my school, I want to know your school journey also. Oh, okay. So like it was quite fun, school was quite fun, now I realize I should have made more memories, not just in school, also in my college, so I miss those days at the moment. So whoever I met, especially the students, those who are in college or say schools, I tell them one thing. So yeah, learning is separate. Okay, everything comes in the learning part. Okay, so each of your experience will add up to your personality, your character, whatever you're thinking, your mindset, and whatever you're going to do in your future. So it contributes to everything. So schools and colleges are not just about like education, like just say just you're writing and reading and you're learning something and preparing for exam. This is not just for that. Okay, there are other activities that you do, because education comprises of the whole part, where you do a lot of things together, and it also adds up to your experience, so back in school, so like it was quite nice, it was quite fun, so like I was, you can say, like I was mostly into studies, I was very studious, like I had to like say I had to perform well. Okay, that was my only thing. But yeah, from that thing, like I got a lot of, say, how do I say, like that thing has helped me, so that helped me as in like you when you are in that position, you get a lot of help from your teachers, from your friends also, like it opens a lot of doors for you, so yeah, also there is a benefit of it. So yeah, this is what school life was mostly. Okay, also like I was in the prefect. Okay, so like in that way I got to explore a lot of other things, so from that I learned more about leadership, empathy, and since I come from this military background, so like it adds up to my whole character, so yeah, coming back to the college life again, so it was quite it was like an ocean for me, so like there are so many folks from different places, so so previous 1 2 year first 1 2 year like were quite tough, as in like to build connection, because we were very introvert, say not introvert in a public, but say when you're going to college and like meeting some new faces every day, so it's a bit of introvert introvert kind of thing, and yeah, obviously like college life was fun again, so learned a lot of things. And that's when like one fine day, like one of our senior, like he told us about entrepreneurship, so that's when I realized, I got to know about entrepreneurship
okay, this is what entrepreneurship is all about. This is how startups are all about. This is what businesses are all about. Okay, since my background is from say military and say what all the government jobs and stuff, so I thought like maybe try and do something different. So I wanted to change this. That was my only motivation. So you can say like I wanted to try my hand on like entrepreneurship and try something. So back in my college, I started with a project with one of my friend, very good friend. So it was my college notes. So it was basically like collecting all the resources and study materials, okay, for all the like say whole department and for mostly the engineering. So it helped a lot of individuals, and also it has helped all of our teachers. So it made their job easier. So you can say we are actually learning and building stuff back in my college days. So it was like a side project only, but yeah, through this we got a lot of connection, learned a lot of things, made made some networks. So again, before completing my graduation, I was quite unsure what should I do in my career. So that was the hardest part, you can say, because there are so many decisions I had to take. Say for example, should I go to join any MNCs? Okay, because I haven't set for any placements. So like because like I cannot like sit, like just for the sake of sitting there. I was not good at aptitude. I never prepare for aptitude and stuff. So I knew that I'll be just going there and wasting my time. That was my only thing. And I never set for any placements also, like because I was confused actually, like what should I be doing, because my whole skill sets are mostly based on startups. Okay, so I had this two option in my hand. So should I join startup or start my own? Okay, so that was very tough. Okay, and starting like with I started with different model basically. So like the fueler that you see today, it was a different model back then. It was a different model. It had a marketplace model. Okay, where we used to do something else previously, but right now a fueler is something else. So yeah, going back again, so I had two options, right? So like I had to choose either of those. So like I went to Delhi. Okay, so where I met friends. They're I had my friends over there. So they are also working with brands. So in that way we collaborated. We collaborated and worked together. So we used to freelance for brands. So again, like we slowly we started building our say niche over there. Like building our presence over there. So again, like things didn't work out some due to some unforeseen reason. So I and one of my friend had to come back to Kolkata again. So we started back there again. Okay, so yeah, one of the best part about this was like connecting with brands. So I have learned a lot from the brands part. So as I mentioned, I had two choices. So I have to go for the starting my own startup, or I should go for working with this startup. So I found the middle ground. That was, you can say, I was quite lucky. Middle ground as in like I was freelancing with brands. Say in a good way. Say for example, I was directly in touch with the founders. Like I was working with them. Helping them with a lot of other things. So for marketing, design, product design. Okay, and obviously from the development point of view. So you can say that that's how like we slowly, and like right now we made a pivot. Okay, previously it was a different model, as I said previously. It was KIWISMEDIA. Okay, so we changed the model into Fueler because we were trying to do something else on KIWISMEDIA, but we understood that we are targeting the wrong audience, and like it is something that won't be working right now. Okay, we have to build our credibility first so that we can work on that idea. But so that's when we thought like we should be pivoting to Fueler. So and one of the reason for that was Twitter. So 2019 we joined Twitter. Say like join as in like took it seriously, connecting with folks, and that's when we realized and we saw the gap. Gap as in there are so many learning institutes and stuff coming up currently. So how do we validate those learning? Like there are institutes. So for example, let me simplify this. There is opportunity and there is your learning. Okay, so you have learned something, now you apply for opportunity. So in the middle there is a very obvious part, that is validation, that you that if you have learned something, what is the proof of it? So that is where proof of work comes in the picture, and we started building Fueler. And like we focused, so you can say we are very laser focused on that part. We're trying to like cut out every noise. Currently we just focus on this small problem here. Okay, small is a very crucial problem here. We're very, so you can say we are a sucker of like simple ideas executed really well. So we're just trying to do that. Yeah, so go ahead, over to you. Yeah, that is the main thing what I have understand of proof of work. You have
you can say clearly explain that whenever we are learning something, we have create some projects which showcase that we are doing this. Like Right. what I understood about this proof of work thing is, like if I am learning designing, if I have created something that is show that I have good skills, then Yes. this means that I have a proof of work. And I think that Fueler is completing that gap of showing that, actually we can create our portfolio which show us work, that what are Yes. you what are we doing and what are we creating. Absolutely. Yeah, that's totally correct. Also, I would like to add here. So, for example, Fueler, like it helps you create your portfolio, okay? And Hmm. say at the same time, say for example, you have done a lot of work, you know. So, say for example, Fueler also helps you become multi-character individual. So, let me explain this. So, for example, you have done a lot of work. Now, so for applying for different niche. So, for example, you are applying to any brand. You know, you are just reaching out to the brand owner. You know, and that is Hmm. from say food sector, okay, and you have done work in multiple sectors, so you won't be sending all of your work to that person. So what Fueler bucket, there is a Fueler bucket, that is a feature, okay. So what Yeah. it does is it helps you create your multi character, you know. So you can say one Hmm. person, but it can have say 20 character or say even more, it depends on you, you know. So however Hmm. you can however want you can use it, you know. So you can say Fueler helps you create your dynamic portfolio where as per situation, as per situations, or say as per like say circumstances, you can create your own profile, okay, with a different landing page, okay, and it helps you apply to those with on the Fueler itself. There is a section where you can like reach out to those person, reach out to those decision makers, you know, they're right. Hmm. So you can say you can directly send email from there with a cover letter, so it makes your job very easy. So currently say all our work maybe somewhere on say WhatsApp. Sometime it's on email. Sometime it's on like here and there, right? Sometime it's on Google Docs. So sometimes it becomes very hard to manage and track. So Fueler, what does it does, like it helps you. It gives you a section, okay. It gives you a place where you can like you can keep all your work, you know. So you can easily check it out whenever you want. You can actually check how many folks like how many like number of folks that you have sent your portfolio, you know, each and everything is are there, you know. So you can very easily check those out on Fueler. Yeah. Yeah. So actually, I was thinking to ask this question, like if you hire someone in future, so Mhm. will you check degree and college? No, absolutely no. Like currently, like so yeah, this is very yeah, good question. Okay, so like no, 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 not at all, because we are already like standing up for this, right? Proof of work. So like you can say we are already connecting folks with this. So like this is something you can say very easy for us because we get folks, we get already folks. We have users currently. We have more than 26 users, all organic, you know. So. So they come and show their work, and based on that we get, like reach out to those, you know. So if we want to work with them, so we work, you know. So we hire freelancers from there, and most of the folks that we have worked with, we have done it this way only. So we work with them, okay. So we understand how things work, okay, and then we onboard them full time, so, or any internship, anything. So we just look for that proof of work thing, that's it. Hmm. This is the question actually I was thinking to ask. With actually, I think that whenever I will ask meet any startup owner or who is a founder or something doing in startup, I will ask this question to them: will they ask for degree or college? Because this is really hyped and overrated question. People actually Yes. ask to every startup, and since nowadays work is really matter. If you have degree and if you are studying in big college but you do not have skill, you are nothing. Correct. This is what I believe. Yes, Since even if I you haven't skill, you taken have a to prove motion. it, you know. So if even if you Yeah. have skill, you have to prove it. So because say from the company point of view, you know, they're very busy, you know, like they don't have any time, they're quite occupied with a lot Hmm. of things, you know. Mostly we, when we apply for some opportunity, we feel like hey, maybe that person is say not is ignoring me, or say like you might be thinking that maybe I'm not good enough. So like the main reason here is, you know, they are the brand owners, you know, they are mostly busy, you know. So they are so busy with a lot of other work, you know. So they get very less time to train people, especially when it's a small company. They look for folks who already know stuff, you know. So they Hmm. always look for folks who know stuff. Also, they are self driven, you know. So you don't want to Hmm. spend time on them.
Okay, so like once you hire them, like then you train them. So you can say there is a very less bandwidth for that, especially for the small companies, mid-size and for startups. But in case of MNCs, yeah, there are special privileges for this where they hire you and like they train you, right? And they like do a lot of experiments with you, right? So you can start from like say zero over there, So even if you just passed out your college and haven't learned a lot of things, so joining there you can like learn from scratch. So like they provide you that, say like they provide you this resources, so it's quite nice that way. But when you're when again like you work for startups and say mid-sized companies, they look for folks who are experienced, who know stuff, who they don't want to spend time on to teach, to train. They expect folks who already know stuff, they know the game, and yeah, just onboard them. Hey, like let's come and work together. We have seen this, and like this is actually how things are working currently, Okay. So actually, I want to ask you, why Twitter? Since Twitter is really growing so fast and people actually come up and share some resources and provide some knowledge. So why Twitter? Twitter is really growing, and will you go with Twitter if all the social media will, let's say an example, there's a time come when every social media will go down, and right? will Twitter go up? Oh, like, see, this is this question, like, like, your question mainly is you want to know like if Twitter will go up in the future, like that's what your question is, right? So that is a very like I don't know like if I'm a right person to answer that question, but like you can say Twitter is the powerhouse of all other social media platforms. That what I believe, what I have seen, every trend starts from there, so every trend and most of the like say like any folk you want to connect, any folk, any founder from any place, you can easily connect them on Twitter, okay, compared to other social media platforms. Because I feel, what I believe, this is my personal experience, Twitter is much less noisy, like it's to the point, it's quite like smooth, okay, it's very good, okay, the user interface is really nice, okay, and it's very easy to connect folks over there, okay, and compared to the other social media platforms where you have a lot of distractions, where like it's very easy to get diverted and say like what lose focus, okay. But yeah, I'm not saying other platforms don't work, they work, and it depends on the person, say person, okay, it varies person to the person to person. So I have seen success stories with Facebook, okay, I have seen success stories with Instagram, okay, I have seen success stories with Twitter. In our case, it's Twitter, because as I mentioned, joining Twitter was one of the greatest turning point for our startup, because we literally pivoted just because of Twitter. When you're building a startup, you need early adopters, okay, early adopters who can actually give you feedback, okay, like they can give you constructive criticism, okay. So like this should be, this won't be working, this would be working, why this should be working, okay. So they come up with ideas, they help you with that. So you can say in our case we need those folks, okay, and we found that on Twitter, so like you can say our main primary channel currently is on Twitter. We do everything, our whole team is on Twitter, we're not focused on other platforms at the moment. But as you ask if Twitter will go up in the future, I like I cannot answer fully on this, but I believe like yes, it will go, because we are seeing that transition, a lot of folks, and say like a lot of folks who are on like in LinkedIn previously, they joined Twitter and they are like, yeah, I won't be going back on LinkedIn again, because Twitter is much more say peaceful. Also, like the quality of connection that you build here is much more rewarding, so you can say Twitter sort of filters out people, filters out quality people for you. So once you build connection with them, you will be starting to see the rewards, and this is for real, okay. Actually, I want to ask you that this Twitter question I have to change that. I actually ask you why you start promoting Fueler using Twitter. And nowadays, I promote Twitter because I personally feel that people are actually quite engaging, and I meet you. I have found you, and I found Fueler, and find multiple person. Actually, I get to talk with many people who give me really good advice related to how I can improve my content, how I can Right. improve English. That stuff. Actually, I am a bit nervous because some technical issues have happened while joining. Uh, No, quite that's okay. before. Now, actually, this is my first time when I am starting my podcast.
So I have just connected my phone to a selfie stick and it got switched off. And Oh, this actually make me really worried, huh? Like what is happening? For the very first time I actually get to talk with anyone and this is happening and this is what. So actually, um, my the main reason you can say behind this podcast, or you can say one meeting, you can say it one meeting, it is more than just a podcast because I get to learn more. Since जब भी मैं पहले कभी पॉडकास्ट वगैरह देखता था यूट्यूब पे, सिंस मेरा काफी रहा है क्योंकि मैं 12th कंप्लीट करने के बाद जो जितना ज्यादा मेरे को एक्सपोजर मिला है, ठीक है, 12th कंप्लीट क्या कहते हैं इस जनवरी से ही 2021 में जब जनवरी हुआ, तो मेरा मतलब मेरे हाथों में यूट्यूब था उस समय और मुझे पता चला कि हाँ ये सब चीजें भी होती है. सो एक्चुअली आई गेट टू नो अबाउट पैसिव इनकम, मतलब आप कॉलेज में जाके अर्न कर सकते हो. हाँ ऐसा कुछ मतलब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि अगर आप कॉलेज में जाके अर्न कर सकते हो तो आप पहले क्यों नहीं अर्न कर सकते. right. मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप कॉलेज में पहुंचोगे तो ये अर्न कर सकते हो. तो हम भी बना लेंगे. थिंकिंग दैट ऐसा भी होता है. फिर मतलब उसके बाद से ही मतलब एक माइंडसेट जो होता है ना, आप बच्चे रहते हो 12 तक आपको नहीं पता होता. अगर आप मतलब आपके दोस्त वगैरह ऐसे हैं जिनका एक्सपोजर अच्छा है, नाउ डेज तो हो चुका है, बच्चों को पता है कि फ्रीलांस चीजें भी होती हैं. मतलब मुझे नहीं पता था और मेरे आसपास के बच्चों को भी उतना पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. Correct. और गाइड करने के लिए भी कोई है नहीं ऐसा. मतलब तो दोस्त वगैरह हैं, पता है मुझे, जितना मुझे लगता है कि जितना मतलब मैंने देखा, इसलिए मैं ज्यादातर प्रमोट करता हूँ ट्विटर वगैरह को और यूट्यूब, इसलिए कि यूट्यूब पे और पॉडकास्ट मैंने शुरू भी इसीलिए किया क्योंकि जब भी मैं कभी पॉडकास्ट वगैरह देखता था तो मुझे लगता था कि इफ आई वॉच अ पॉडकास्ट, जो लेसन मेरे को उससे मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं उनसे डायरेक्टली बात करूं तो कितना ज्यादा मिल पाएगा. और जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं उनसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ. Right. तो क्या होता है कि आप स्टार्टअप वगैरह के जो फाउंडर्स वगैरह होते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने वो चीज स्ट्रगल किया होता है. आपने फ्यूलर शुरू किया है, आपने चेंज किया है, आपने बताया कि आपका फ्यूलर से पहले भी एक मतलब दूसरा मॉडल Yes. था, आपने फिर चेंज किया. Right. चेंजेस तो करने पड़ते हैं जैसे मैंने किया, क्योंकि जब मैं 9th में था तो उस समय मतलब मैं काफी एवरेज बच्चा था, ठीक है. उस समय मतलब मेरी मैथ्स काफी वीक थी. 9th में आने के बाद मैंने काफी मेहनत करी मैथ्स सुधारने के लिए. फिर उस समय मुझे पता चला कि एक यूट्यूब करके भी चीज होती है. मतलब उस समय आप मतलब मैं मतलब इंटरनेट से कोई वास्ता था नहीं. मुझे Right. पता था कि हाँ यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे काफी नेट खत्म हो जाता है, इतना मतलब उसमें पता था कि अरे यूट्यूब पे अगर चलेगा वीडियो तो नेट खत्म हो जाएगा, ऐसा करके पता था. लेकिन ये नहीं Right. पता था कि यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हो. तो उस समय पता चला कि यूट्यूब पे आप वीडियो भी बना सकते हो. तो मैंने कहा यार Okay. क्यों ट्राई करते हैं. और बेसिकली आइडिया क्या था इसके पीछे, बेसिकली आइडिया था कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट होगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप हो कोई चीज. ठीक है, Yes. क्लास में क्या होता है काफी बच्चे होते हैं और टीचर जान रहा होता है कि भाई ये बच्चे हैं, लेकिन क्लास में आपकी अगर अलग पहचान होती है तो लोग आपको जान रहे होते हैं. जैसे कोई बच्चा टॉपर होता है तो वो टॉपर से जाना जाता है कि ये बच्चा टॉपर है. कोई बच्चा एथलीट होता है तो उसको सब एथलीट से जानते हैं. कोई सिंगर होता है उसको सिंगर से जानते हैं. लेकिन इफ समवन हु इज अ यूट्यूबर, सर उस समय के लिए काफी बड़ी बात थी लोगों के लिए. तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए. मैंने शुरू किया यूट्यूब, मतलब कैमरा लगाया, फोन ऐसे किताब विताब को लगा करके शुरू किया वीडियो बनाना. तो शुरुआत में तो मतलब नहीं पता था, फिर अचानक से पता चला कि यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं. तो ये तो बड़ी गजब की बात हो गई थी. मतलब मुझे लगा कि अरे बहुत पैसा मिलता होगा ऐसा वैसा. तो शुरू में तो जब आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि ग्रीड आ जाता है तो आप उस चीज को खराब कर देते हो. तो मैंने खराब किया, मतलब वो पहला फेलियर था. फिर उसके बाद फिर 2-3 चैनल और बनाए, उसमें भी फेलियर आया. अच्छा. तो आई वाज थिंकिंग कि अब वैल्यू क्रिएट करने का टाइम आ चुका है. क्योंकि जितने भी यूट्यूबर ग्रो करे हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी, उन्होंने वैल्यू ही क्रिएट किया है. Yes. विदाउट वैल्यू आप टिक नहीं सकते. और Value ये and चीज मैंने समझ entertainment. लिया. Value and या entertainment. So like you choose either of this. या Right. या ठीक है. या तो आई वाज थिंकिंग दैट कि मुझे शुरू करना चाहिए. तो ये आइडिया मुझे 10th तक में आया क्योंकि 10th में काफी यूट्यूबर अपने सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना शुरू कर चुके थे. तो Correct. सक्सेसफुल स्टोरीज के लिए जो स्टॉक जैसे चीजें आ चुकी थी मार्केट में और फिर धीरे धीरे लोग शेयर करना शुरू कर रहे थे. पता चल रहा था कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है, लोग ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बिजनेस बना ली. स्टार्टअप भी एक चीज होती है. मतलब मेरे को 11th में आके पता चला कि स्टार्टअप भी एक चीज होती है. मुझे लगता था कि बिजनेस मतलब वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वो बिजनेस होता है और वही लोग होते हैं, उसके अलावा और बिजनेस कुछ नहीं होता. फिर स्टार्टअप के बारे में पता चला, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पता चला कि अच्छा ये सब चीजें भी होती है, फाउंडर भी होता है. तो ऐसे धीरे धीरे मतलब पता चलता गया. और मतलब होता है ना कि अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना, मतलब आप कोई चीज ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको उसमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. तो Correct. घूमते घूमते मेरे को पॉडकास्ट मिला और फिर पॉडकास्ट को देख करके मुझे लगा कि मैं करूंगा जरूर.
उस समय मतलब सोच लिया था कि करना है, डिसाइड नहीं किया कब करना है, कभी ना कभी तो करेंगे। अब आज मतलब मैं ऐसे रैंडम मतलब वीडियो बनाना शुरू किया कुछ दिन पहले, ट्विटर पे आया, ट्विटर पे काफी रिसोर्सेज लोग शेयर कर रहे थे और इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। और मतलब मैं देखता हूँ सिंस आई वाज इन 12th मुझे डिस्कॉर्ड के बारे में पता चला अचानक से। वो तो होता नहीं, आप घूम रहे होता है आपको अचानक से पता चलता है क्या करेक्ट। डिस्कॉर्ड भी करते हैं। या तो डिस्कॉर्ड मतलब काफी ऐसा कह सकते हैं कि वो मेरे लिए पहला चीज था जिसमें मैं लोगों से नेटवर्क कर पा रहा था, पहली बात कम्युनिकेट कर पा रहा था। क्योंकि आपको डिस्कॉर्ड क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट आप माइक ऑन करो और बात कर सकते हो। तो पहला जो बात करने का कॉन्फिडेंस आया अननोन लोगों से वो वही था। फिर करेक्ट। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को एवेलॉन मेटा के बारे में पता चला। आपको पता होगा एवेलॉन मेटा के बारे में, यस, उन्होंने तो एब्सोल्युटली। आपको सपोर्ट भी करा हुआ है प्रूफ ऑफ वर्क को। तो एवेलॉन मेटा पे हम गए, हम डिस्कॉर्ड सर्वर पे उनके, तो वहां पे थे। तो वहां पे मुझे ग्राफिक डिजाइन के बारे में पता चला कि अच्छा ग्राफिक डिजाइन करके एक चीज होती है जिसे आप कर सकते हो। मैं उस चीज को देखा, मतलब एक दो लोगों के तो 3D आर्ट थे, तो मैं कहा अरे यार 3D तो अपने से होगा नहीं। फिर मैं ऐसे देखते देखते जा रहा था तो कुछ लोगों ने बैनर वगैरह बना रखे थे और पोस्ट वगैरह क्रिएट करके रखे थे। उसको देख के मुझे लगा कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। वो मतलब काफी मस्त था क्योंकि यार मैं जब YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ था तब उस समय हमें थंबनेल बनाना पड़ता है YouTube के लिए। 9th क्लास में मुझे याद है, मैं लोग यूज करते थे थंबनेल मेकर करके, एप्लीकेशन कई सारे होते हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया उसे। मैंने उसे स्किप करके मैंने मैनुअल मेथड शुरू करना, मैंने कहा यार मैनुअल मेथड करेंगे। और मुझे वो बात 11th या 12th के बीच में जब मैं ट्रांजिशन कर रहा था तब मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज इसमें भी आता है। तो राइट। मैंने थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू किया थंबनेल बनाना। अच्छा, थंबनेल तो बनाना मैंने शुरू कर दिया, फिर यूट्यूब पे आए वापस। क्या क्या फिर से यूट्यूब बनाएंगे, थंबनेल बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि फॉन्ट्स करके भी कोई चीज होती है, फॉन्ट होता है, कलर होता है, ऐसे करके राइट। काफी चीजें पता चली। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा ग्राफिक डिजाइन में, और फिर धीरे धीरे अभी 12th कंप्लीट होते होते मुझे पता चला कि फ्रीलांस करके भी एक चीज होती है। और अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि नेटवर्किंग करके भी एक चीज होती है। राइट। सो ये तो मेरी कंप्लीट जर्नी है, इसमें काफी फेलियर्स मैंने झेले भी हैं, देखे हुए हैं, और पता चला है कि हाँ भाई ये सब चीजें अगर आप कोई चीज मतलब मैंने खुद जो सीखा है वो है ये जो प्रूफ ऑफ वर्क को मैं रिलेट भी इसीलिए कर पाया क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे से ही अलाइन करता है, क्योंकि मैंने करके सीखा है वो चीज। यस। और जब मैं कोई चीज करके सीख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है ना कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। कोई चीज अगर करेक्ट। कोई कर रहा है कोई चीज अगर कर रहा है तो उससे मतलब आप अगर आपको कहीं शो करने को मिल जाए कि हाँ आप शो कर रहे हो कि ये काम आपने किया है, और उससे अगर आपको आपके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं तो वो उससे बड़ा कोई और चीज नहीं हो सकती। एकदम सो एकदम। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज कि ये फ्यूलर नाम आया कहाँ से? फ्यूलर नाम दिस इज एक्चुअली, समथिंग। यस, सो एक्चुअली क्या था ना, फ्यूलर बेसिकली ये हमारा टीम का वो था, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नहीं, लाइक दिस इज रियल। सो हम जब क्यूविश मीडिया बना रहे थे, ठीक है, तब हम जब लाइक जो टीम थे, सो द टीम वेयर फ्यूलर, हम वो टीम का एक वो था कि लाइक हम लोग फ्यूलर है, यू नो। सो द टीम हु इज बिल्डिंग क्यूविश मीडिया, सो यू कैन से उनका नाम था फ्यूलर, you know, so each one of us are fueler, so you can say वहां से इस नाम का वो आया। so and it came from a tagline, you know, so जो हम लोग का जो क्यूविश मीडिया था पहले, उसका एक टैगलाइन था, एक स्लोगन था। स्लोगन ये था कि फ्यूलिंग इंस्पायर्ड कंपनीज, ठीक है, फ्यूलिंग इंस्पायर्ड ब्रांड्स, ठीक है। सो फ्यूलिंग जो था वहां से, वो फ्यूलिंग से बेसिकली फ्यूलर आया था, ओके। एंड लाइक द टीम, लाइक वी वर वर्किंग टुगेदर, हम लोग फ्यूलर्स थे, ओके, वी फ्यूलर्स एंड वी फ्यूल, यू नो। सो वहां से बेसिकली फ्यूलर का रेफरेंस आया। देन वी फिर हमने लाइक 2021 में हमने लाइक सोचा फिर कि लाइक मे बी वी हैव टू मेक दिस ट्रांजिशन, यू नो, लाइक, और ऐसे एक ब्रांड नेम रखना होगा जो सिंपल है एंड इजी टू रिकॉल, यू नो, ऑल्सो दैट रिलेट्स टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यू नो। सो करेंटली इफ यू आस्क, सो फ्यूलर आपको कैसे हेल्प करता है, सी लाइक से फ्यूलर इज बेसिकली लाइक आप कोई कंपनी, आप किसी को कैसे हेल्प कर सकते हो, right? How you can fuel someone, or how you can fuel any company, okay, like, or any brand when you're working together. So you can say your fueler profile is a proof of that, you know। proof मतलब क्या, आपने वो सब काम अपना करके दिखाया है वहां पे, and when you share those, okay, in that way you can build your credibility, or say they can trust you कि hey, like this guy or this girl has like done this sort of work, and like I can trust him and let's work together. So you can say that's when
फ्यूलर कम्स इनटू द पिक्चर। मैंने आपका वो नाम फिर वहीं से आया एंड बस हमने फ्यूलर तभी से फाइनल कर दिया एंड वही था। आई गेस दैट वाज वन ऑफ द क्या बोलते लाइक यूजफुल डिसीजन। ओके, लाइक वो काफी अच्छा डिसीजन था हमारा, क्योंकि एटलीस्ट दिस साउंड्स बेटर देन क्यूश मीडिया। सो या, तो वो पहले कुछ और था, तो अभी फ्यूलर आपको जो नाम है, फिर हमने फाइनली 2021 मई 15 में हमने रिब्रांडिंग किया पूरा होल प्रोडक्ट का। ओके, सो अभी बेसिकली फ्यूलर है। अब मैं काफी मतलब जब भी हम कभी स्टार्टअप का नाम सुनते हैं कि Right. एक स्टार्टअप का फाउंडर से हमें हमारी बात होने वाली है, तो हमें लगता है कि यार कितना पैसा वाला होगा, है उसके पास कार होंगी काफी बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे सपने आ जाते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ऐसा ऐसा होगा। तो आप क्या कहना चाहोगे कि स्टार्टअप जर्नी कैसी होती है, मतलब आपको क्या क्या मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब पता होना चाहिए ना कि हमें कि आपको क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। दिस इज सब्जेक्टिव। ओके, सो हर्ष, बात ये है ना कि एक्चुअली ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव मतलब हर किसी का जर्नी अलग होता है। एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। सो अगर आप अभी आप स्कूल खत्म किए जैसे आपने बोला, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक ऑब्वियसली कॉलेज मैटर्स। ओके, यहाँ पे कॉलेज मैटर करता है। अगर आप सोच रहे हो कॉलेज ज्वाइन करना है, सो या आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि इट विल गिव यू क्वालिटी पीपल। ओके, नॉट बिकॉज वहां पढ़ाई अच्छा होता है प्लेसमेंट आपको मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट ट्रस्ट मी, मेरे को जो लगता है कि कॉलेज के बारे में बहुत डिस्कस नहीं करते, वो है द काइंड ऑफ नेटवर्क यू बिल्ड देयर। ओके, आल्सो द एलुमनी, ओके, यू गेट देयर, द एलुमनी नेटवर्क यू गेट एक्सेस टू। तो वो एक अच्छे कॉलेज को बहुत मैटर करता है। आल्सो द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू गेट इन ए रेप्यूटेड कॉलेज। तो मेरे को लगता है कि ये पार्ट ज्यादा पब्लिसाइज करना या फिर इस चीज को ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, रादर देन कि भाई इस कंपनी में अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। मतलब बहुत, मतलब ये बेसिकली एंड गोल होता है कि भाई हाँ यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो लेट्स गो टू दैट कंपनी, बट वहां पे ये नहीं बताते हैं कि और भी क्या क्या बेनिफिट होता है। सो मेरा भी कहानी वैसे ही था। सो आई ऑल्सो थॉट कि यार मतलब कॉलेज तो कोई भी हो भाई, बंदा अच्छा होना चाहिए, लाइक मतलब आपको फोकस करना चाहिए, इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू इन द एंड, आपका ही करना है। बट अगेन वो है, दैट इज 80%, बट अगेन 20% आपका ये बहुत मैटर करता है, और समटाइम वो 20% आपका पूरा 80% को भी पूरा वो कर देता है, सो there is a huge advantage अगर आप एक अच्छा कॉलेज में आते हैं और वहां पे आप सही चीज करते हो, ठीक है। तो जो एफर्ट आप एक नॉर्मल कॉलेज में दोगे, सेम एफर्ट वही आप कोई अच्छा कॉलेज में दोगे ना, तो वहां पे आपका लाइक उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा होगा और जल्दी होगा, बिकॉज दे वैल्यू सच टैलेंट्स। जब नॉर्मल कॉलेज में आपका इसका इतना वो नहीं रहता, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यू डू इट ऑन योर ओन रिस्क, ओन बैंडविड्थ एंड ओन रिसोर्सेज। तो ये आपका फिर बड़े कॉलेज में होता है, वहां पे उसका अलग से प्रेफरेंसेस होता है, आपको उसका अलग सा सब कुछ मिलता है। सो आई वुड से कि भाई कॉलेज तो मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छा कॉलेज ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली इट मैटर्स, एंड स्पेशली लाइक इफ यू आस्क मी अबाउट माय जर्नी, तो भाई लाइक है, लाइक आई डोंट सजेस्ट एनीबॉडी टू गो फॉर स्टार्टअप, ठीक है, वेरी इजी, क्योंकि स्टार्टअप्स आर समथिंग एल्स। इट्स लाइक कि मतलब लाइक कमिंग अप विद ए वैक्सीन, के कोविड का वैक्सीन, ओके, and yeah, so startups are like that. Okay, startups में क्या होता है, you bring out something new in the market, so it's like कि मतलब वो है ना कि and there is a huge chance of failure, right? आपको ही पता है। so you can say the whole team जो होते हैं स्टार्टअप की टीम, they are like a scientist, साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट मतलब क्या है कि उनको लैब में अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इसका वैक्सीन निकालो, ठीक है। तो सेम वे यू कैन से जो स्टार्टअप टीम होता है अर्ली स्टेज, उनका भी सेम रोल होता है, बट हियर नोबडी इज फंडिंग यू, मतलब अनलेस यू आर नॉट, मतलब आपका अगर फंडिंग मिलता है वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ टाइम लाइक 95% आई डोंट थिंक लाइक उनको मिलता है, ठीक है। सो दे डू बाय देयर ओन, ओके, सम वर्क समवेयर, लाइक कोई जॉब करते हैं, राइट, कोई कॉलेज लाइफ में शुरू कर देते हैं, सो दैट देयर इज दिस बैकअप यू हैव फॉर यू, जहाँ पे आपको चीज रहे कि उसमें टाइम दे पाओ, सो हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है, लाइक इसलिए मैं अभी किसी को लाइक इतने इजीली बोलता नहीं कि भाई डोंट गो फॉर, डोंट जस्ट परस्यू स्टार्टअप, बिकॉज आपको पहले एक फाइनेंशियल का एक स्टेबिलिटी आप बिल्ड कर लो, ठीक है ना। सो गो फॉर बिजनेसेस, स्टार्ट एन एजेंसी और वट एवर यू कैन, ठीक है, वहां से एटलीस्ट यू विल हैव सम गुड कैश फ्लो, ओके, सो दैट using that cash flow you can build your startup, so आपका जब cash flow का problem solve हो जाता है, then focus on building a startup जहाँ पे you can put in your hours where you don't have to expect कि हाँ मेरे को यहाँ से ROI आएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि स्टार्टअप्स में it's very hard to like get cash flow very easily, ठीक है ना, जहाँ पे क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल नया बन रहा होता है, तो
लोग उसमें फिर लाइक मतलब यू हैव टू सी ना कि ये चीज काम कर रहा है कि नहीं, लाइक इफ दिस मॉडल इज वर्किंग, तो उसमें टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप बूटस्ट्रैपिंग करते हो तो फिर और टफ है, ठीक है ना। वहां पे लाइक आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस एंड यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रायोरिटीज, यू नो। आपके बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं जहाँ पे आपको मतलब सोच समझ के ग्रो करना पड़ता है, ठीक है ना। सो या समवेयर इट हेल्प्स यू बिकॉज इट मेक्स यू मोर क्रिएटिव। ओके, सो हमारे लिए तो ये किया, क्योंकि अगर हमको लगता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमको अगर इतने सारे कैश मिल जाता है, सो लाइक मे बी हम इतना एफर्ट डालते ही नहीं कभी। ओके, सो सिंस हमको नहीं मिला, सो वी ट्राइड स्क्वीजिंग एवरी बिट आवर एफर्ट। सो हर एक दिन हमारा वो होता है कि हमको बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, ठीक है। इवन अंटिल रात के 1-2 बजे तक भी वी आर जस्ट डूइंग मीटिंग फोक्स, यू नो, लाइक द डिफरेंट पार्ट से, लाइक उनसे मीटिंग होता है, बात होता है, नो। सो वी जस्ट डू इट, क्योंकि लाइक अभी एक पूरा वो आदत बन चुका है। सो अगेन आई टोल्ड यू ना, इट डिपेंड्स ऑन द टीम, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द लाइक होल मॉडल आल्सो, आइडिया, आप किस आइडिया में काम कर रहे हो, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना। सो या सो अभी मुझे एक चीज इसमें से मैंने निकाली, वो है बुक रीडिंग वाली बात। हाँ, तो मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ काफी बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं पूछना राइट। चाहूंगा कि आप आपके मतलब बुक रीडिंग से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहोगे, मतलब ओ यस, बुक लाइक पढ़ना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली मैन, लाइक आज अगर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है ना, उसका एक पिलर बुक्स है। Okay, हम्म, I can proudly say that. Okay, so you can say this is the whole shelf. This is my only asset, you can say, from my college life. Okay, so like I invested a lot of time reading books. Trust me, मैंने बहुत book पढ़ा है. My friends knows, you know. So उनको पता है how I used to prioritize anything over reading books, you know. So um, मतलब रीडिंग बुक्स ओवर एनीथिंग, सॉरी। सो लाइक मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई बुक्स तो आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आई टोल्ड यू ना, सो व्हेन यू गो टू एनी कॉलेज, जहाँ पे अगर आपको आपको तो आपका लाइक यू टू गिव योर बेस्ट, यू नो, सो यू हैव टू स्क्वीज आउट योर बेस्ट, मतलब आपको बस डिफरेंट सिचुएशन में बेस्ट निकालना है, ठीक है। सो मेरे लिए क्या था कि मैं सबसे प्रायोरिटाइज किया इंटरनेट को, ओके, और बुक्स को, ओके। मैंने, क्योंकि मुझे पता था भाई मेरे को अगर इनसाइट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ स्टार्टअप में कुछ करना है, तो यू हैव टू हैव अ ग्रेट इनसाइट ओवर एनीथिंग, सेम फॉर मार्केट, फॉर प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर पीपल, कल्चर, ओके, सो मेनी थिंग्स, मार्केटिंग, डिजाइन, हर एक चीज, ओके। सो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इन दैट वे यू विल बी लर्निंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीख पाओगे, बहुत जरूरी है। आई गेस रीडिंग बुक्स इज ए ग्रेटेस्ट हैक एवर से एवर ह्यूमन हैज डिस्कवर्ड, यू नो, बिकॉज एक बंदा अपना लाइफ का एक पूरा से 50 ईयर्स 60 ईयर्स का अपना पूरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस एक 300 या 400 पेज में लिख के जाता है। सो टेल मी a reason one shouldn't be reading book. Okay, so I think everybody should read books. I make priority for this. My first book was Rich Dad Poor Dad, so that I read that book on my first year of college life. So from that time the life has changed, you know. So I'm happy that मैंने books को actually एक priority बनाया. It was one of my pillar. So you can say आज अगर filler exist करता है, it's because of the book. Yeah, it gives you insights, courage, and a lot of confidence. फर्स्ट टाइम जब मुझे भी मतलब पहली सैलरी मिली थी, मतलब पहला फ्रीलांस जब जॉब किया था, मतलब तो जो पहली पेमेंट मिली थी, उस पेमेंट से मैंने बुक ही खरीदा था। मतलब मेरे लिए तो बुक थी ही। मतलब मैंने सोच के रखा था कि मैं बुक्स तो लूंगा, मतलब Right. कुछ भी हो जाए। मतलब बुक्स क्या होता है ना कि आपको किसी एक पर्सन का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है बुक के Yes, जरिए। क्योंकि absolutely. उसने अगर कोई चीज, मतलब जो फर्स्ट बुक मैंने खरीदी थी वो थी द रिचेस्ट मैन इन बेबी लोन, और Okay. काफी अच्छी बुक है फाइनेंस के ऊपर। लोगों को पता Yes. होगा, आपको ही पता होगा। Yes. फाइनेंस के ऊपर काफी अच्छी किताब है, और उसके बाद से जो मतलब खुला है दिमाग वो काफी गजब नहीं, की है। बुक्स यू शुड रीड, यू नो। रीडिंग बुक्स इज टफ, ओके, लाइक लोगों को लगता हो कि बहुत इजी है, पढ़ लेंगे, पर इजी नहीं है, ओके। सो लाइक लेट मी गिव यू कॉन्स्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्रास्टिंग फिगर आपको मैं देता हूँ। सो आप जब स्क्रीन देखते हो, मूवी देखते हो, या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो देयर इज दिस वेरिएबल रिवार्ड, यू नो। वेरिएबल रिवार्ड मतलब हमारा ब्रेन का एक बहुत बड़ा वो पार्ट है कि हाँ, मतलब नेक्स्ट ये आएगा, नेक्स्ट ये आएगा। सो यू, आपका दिमाग में एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ, मतलब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, राइट, व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग और से वाचिंग अ मूवी और एनीथिंग, रील्स, आप कुछ भी देख रहे हो। बट बुक्स में ऐसा नहीं है। लाइक you have to say, you have to close all your senses and you have to focus on that, you know, like मेरे लिए books पढ़ना एक meditation बन चुका है। So it's like when I'm reading now, so I'm just like shutting out everything, so I'm just reading right now, okay। and easy नहीं है ये चीज, क्योंकि भाई like you cannot focus, you know, because और especially जब आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपका brain बहुत hyper activity करता है, you know, एक like आपके दिमाग में ये बहुत सारी चीज आते रहता है जब आप पढ़ते हो, ठीक है ना। सो ऑल्सो लाइक नॉट जस्ट फॉर द आउट, मतलब जो बाहर के थॉट, उसके अलावा भी आप जब पढ़ते हो ना, सो यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। तो वहां पे आपको कंट्रोल करना होता है कि नहीं, आई एम जस्ट गोना राइट दिस आउट, जब ये खत्म करूंगा देन आई विल बी वर्किंग ऑन दिस।
सो लाइक एक पॉइंट में ऐसा होता है, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी शुड रीड बुक्स, ठीक है ना. और इसको इजी करने के लिए हमने एक्चुअली एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, ओके, शिप मी अ बुक. सो लाइक वो बहुत जो हम लोग एक्चुअली लोगों तक पहुंचाएंगे, यू नो. सो वो एक इनिशिएटिव है जहाँ पे लाइक से आई वांट टू गिफ्ट यू अ बुक, ओके ओके, और मुझे एक्चुअली आपका डिटेल्स वगैरह चाहिए होगा, राइट, बट विद शिप मी अ बुक मेरे को नहीं चाहिए होगा. सो आई कैन जस्ट सेंड यू अ बुक, मतलब इजीली, वेरी इजीली, विदाउट हैविंग योर ऑल योर विदाउट हैविंग ऑल योर पर्सनल डिटेल. सो ये एक नया प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी. अभी हम लोग बीटा में है जहाँ पे हम लोग उसका ऑपरेशन में ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है. सो या वेरी वेरी सून, क्योंकि बुक्स इतना फेवरेट है हमारा. सो वी थॉट कि क्यों ना इसके रिगार्डिंग एक प्रोडक्ट बिल्ड करा जाए, एंड इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, यू नो. सो आई होप लाइक बहुत जल्दी हम इसको आपके सामने ला पाएंगे, ठीक है. या सो मतलब नेक्स्ट चीज मैं जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपका जॉब क्या, मतलब आपका काम क्या रहता है फ्यूलर में, आपको करना क्या होता है? इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन अगेन. सो काम ऐसे. सो लाइक अगर आज का बोला जाए, सो लाइक हैड मीटिंग, ओके, सो राइटिंग ईमेल, ओके, लाइक रिव्यूज करना, फिर लाइक फिर लाइक वर्किंग ऑन सम लाइक न्यू आइडियाज, यू नो. आइडियाज मतलब उस पे डायरेक्शन वो करना, ठीक है ना, कि लाइक नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, क्या लाना होगा, और एग्जिस्टिंग जो काम हो गया उसको सही से वो करना है, ठीक है ना. सो लाइक मोस्टली ये रहता है. इट्स ये कोई बाइनरी नहीं है कि लाइक मैं आपको बोल पाऊंगा कि हाँ मैंने ये ऐसा चीज है. तो एवरीडे इट्स डिफरेंट, यू नो. एवरीडे यू हैव आपको अ लॉट. मतलब या व्हाट आई लर्न आई कि आपको मल्टीटास्किंग रहना पड़ता है. लाइक ये आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली उसके अंदर आपके अंदर आएगा, ठीक है. सो लाइक यू हैव टू डू इट. एवरी स्टार्ट ऑफ टीम ना, स्पेशली जो टीम होता है ना, एटलीस्ट फर्स्ट 10 लोग तो भाई यही होता है, ठीक है. उनको उनको वो लोग ज्वाइन करते हैं शायद, हाँ मेरे को बस ये करना है, बट ऐसा नहीं है. हमारे टीम में ऐसे ऐसे बंदे लाइक दे कम फ्रॉम वेरी लाइक वाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैराइड बैकग्राउंड्स होते हैं, और अभी वो कुछ और कर रहे हैं, you know. So like यही चीज है, you know, and in that process they find their love, you know, in that process they get to understand कि उनको क्या पसंद है, you know. कॉलेज लाइफ में कुछ और थे वो लोग, फिर जब अभी फ्यूलर में ज्वाइन किए, फ्यूलर में काम करते, लाइक दे आर डिफरेंट पर्सन. सो यू कैन से लाइक वर्किंग इन अ स्टार्टअप इज लाइक क्यूरियोसिटी ऑन स्टेरॉइड, यू नो. सो ये मतलब है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज डील करना होता है. एज पर सिचुएशन यू हैव टू वर्क ऑन, यू हैव टू एक्ट, ठीक है ना. सो वही लाइक अगर आप पूछेंगे लाइक मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया, सो लाइक आई यू कैन से आई वर्क मोस्टली ऑन द मार्केटिंग कम्युनिटी प्रोडक्ट, ठीक है. एंड अगर इसके अलावा फाइनेंस एंड वो सब तो है ही, बट लाइक दिस आर द मेन कोर मेरे लिए है, जहां पे आई लुक आफ्टर दिस थिंग्स, यू नो. सो आई टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. सबसे आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर आप मतलब फिर से वापस जा पाओ और मतलब मेरी एज तक पहुंच पाओ 18 इयर्स तक, तो आप क्या टिप देना चाहोगे खुद को? बहुत 18 ईयर सारा. ओल्ड अगर आप खुद से नहीं पाते हो तो क्या बहुत मतलब सारे. आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या टिप्स दोगे? हाँ कि ये करो भाई, ये करो. से like okay, like three things, ठीक है. three things very very shortly, three things. कि भाई नंबर वन तो भाई आई वुड सजेस्ट कि रीड बुक्स अ लॉट, ठीक है. और रीड बुक्स के पैसे आपको नहीं मिलेंगे इजीली, क्योंकि आई कैन रिलेट माई सेल्फ हियर, क्योंकि भाई जब मैं कॉलेज लाइफ में था ना, आई डिडंट हैव मनी टू बाय बुक्स, यू नो. सो लाइक उसको करने के लिए आई लर्नड अ डिफरेंट स्किल्स. मैंने स्टॉक मार्केट सीखा, फिर आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, यू नो. सो वहां से मेरा फ्रीलांसिंग का जर्नी शुरू हुआ कि भाई आई नीड मनी, ओके, बिकॉज जो अच्छे बुक होते हैं ना वो बहुत कॉस्टली होता है, ओके. अभी तो चलो उसका फर्स्ट कॉपी वगैरह आता है तो आपको बहुत कम में मिल जाता है, बट प्रीवियसली इट वाज वेरी कॉस्टली, से 800 900 1000 होता था, और स्पेशली एक कोई कॉलेज स्टूडेंट के लिए वो बहुत बड़ा वो होता था, ठीक है. तो दैट वाज वेरी हार्ड, यू कैन से. तो अगर अगर आप आपके उसमें अभी लाइक से एज यू आस्क, ठीक है, तो मैं नंबर वन बोलूंगा यू हैव टू रीड अ बुक. सो बुक बस खरीद के नहीं पढ़ सकते, आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो. गूगल प्ले बुक लेवरेज कर सकते हो, ठीक है. गूगल प्ले बुक यू कैन से वन ऑफ माय फेवरेट ऐप, बिकॉज वहां पे मेरे पास 700 से ज्यादा बुक्स वहां पे है, यू नो. सो व्हेनेवर आई एम लाइक से वेटिंग समवेयर, और से लाइक मैं बाहर में कहीं पे हूँ जहाँ पे लाइक आई कैन एक्चुअली रीड बुक ना, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स आई एम रीडिंग दैट बुक, यू नो. सो ये मेरा एक प्रायोरिटी बना था. सो आई इफ आई कैन बाय द बुक, सो आई यूज्ड टू डाउनलोड दैट बुक, ठीक है, और मैं वहीं से पढ़ता था, ठीक है. इट्स वेरी इजी. गूगल प्ले बुक में आप कोई भी जैसे पीडीएफ होता है वैसे .epub होता है, .epub वर्जन आप डाउनलोड करो मोबाइल उस बुक का, और उसको फिर अपलोड कर दो उसमें, ठीक है. तो वहां पे इन दैट वे इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रीड बुक्स, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशनल हैक रीडिंग बुक्स, ओके. दैट इज फॉर मी. नंबर टू, की बीइंग एक्टिव ऑन ट्विटर, यू नो. टेक ट्विटर सीरियसली. कल भी मैं एक किसी लाइक आई वाज सेइंग समवन, okay, ki like I don't know which platform currently you are using, but at least try to make your presence on Twitter itself, because it will change your life, okay. Kyunki we have seen, okay, we have seen folks
मतलब जिनके लाइफ चेंज हुए हैं, ठीक है, जस्ट विद ट्विटर, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रीलांसिंग जर्नी, उनके फ्रीलांसिंग जर्नी से लेके उनका खुद का पर्सनालिटी से लेके उनका जॉब व्हाटएवर, ठीक है, तो बहुत ओवरऑल उनका बहुत ग्रोथ उनका हुआ जस्ट बाय स्पेंडिंग सम टाइम ऑन ट्विटर. सो या, नंबर 2 इज अगेन ट्विटर, मेकिंग ट्विटर. एंड नंबर 4 इज लाइक डूइंग बोल्ड थिंग्स, ठीक है ना, बोल्ड थिंग्स लाइक मतलब से फॉर एग्जांपल लोगों से मिलना है, बात करना है, ठीक है, तो मतलब बैक देन लाइक क्या होता है ना कि लाइक वी आर वेरी स्केयर्ड, यू नो, लाइक हम बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, राइट. सो व्हाट आई हैव रियलाइज ना कि एवरी डे वी बिकम द बोल्डर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, यू नो. सो अगर आप अगर लाइक मैं अगर उस टाइम में जाऊंगा तो आई वुड ट्राई टू डू समथिंग वेरी बोल्ड, यू नो, आई वुड ट्राई टू डू समथिंग वेरी एम्बिशियस, यू नो, आई वुड बी ट्राइंग टू चेज दैट इंस्टेड ऑफ लाइक लिमिटिंग माई सेल्फ. So, ये एक चीज है जो मैं वो हैबिट में तब बिल्ड करना चाहूंगा जहां पे आई एम जस्ट टेकिंग लाइक बीइंग एन एम्बिशियस गोल्स कि भाई मुझे ये अचीव करना है, मुझे इनसे बात करना है, मुझे इनको रीच करना है, मुझे इनको दोस्त बनाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है, मुझे यहाँ पे काम करना है. ओके, तो ये एक चीज था. एंड एक और चीज लाइक फोर्थ चीज एक बोनस है. बेसिकली बोनस ये कि लोगों के साथ काम करो, ठीक है, लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मतलब एक मिथ है, मिथ मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि डोंट वर्क, मतलब वर्क फॉर फ्री, इंटर्नशिप ये सब मतलब पेड होना चाहिए, दिस इज क्राइम. बट मुझे लगता है ये दोगलापन है सब. ओके, ट्रस्ट में, क्योंकि अगर आप अगर लाइक वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, नोबडी इज गोइंग टू हायर यू. ओके, एंड आप अगर एक्सपीरियंस से नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं तो बहुत आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे. तो एक आपके पास एक वे होता है कि हाँ आई विल वर्क फॉर फ्री. ओके, तो उससे क्या होता है कि इट इंक्रीजेस योर चांस ऑफ गेटिंग इनटू ए स्टार्टअप और से एनी कंपनी, ठीक है. तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट हैक है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया अपने यूट्यूब पे. सो लाइक व्हाई यू शुड गो फॉर एक्सटेंशिप, ठीक है. एक्सटेंशिप आपका एक पूरा दरवाजे खोलते हैं बहुत सारे, स्पेशली बिकॉज इट मेक्स यू वर्क विद सो मेनी अमेजिंग फोक्स. ओके, जहां पे उनको सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हाउ मच आई हैव टू पे और दैट, क्योंकि वो अलग टेंशन होता है. बट इफ यू से आई विल बी वर्किंग फॉर फ्री जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, इस वजह से आई कैन टेल you are going to learn a lot of things. आपका एक्सपीरियंस ना मतलब क्या बोलो लाइक इट्स गोइंग टू लाइक क्वाड्रुपल, यू नो, लाइक 5x 10x जाता है वो. एंड अगर आप वेट करते हो ना कि नहीं मेरे को यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, वहां से नहीं, तो आपके ना यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ अगेन. एंड पैसा मिलना है मिलने मतलब कि लाइक वंस यू डू फॉर फ्री ना कि एक दो बार, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पैसा मिलना होता है. सी नो लाइक, एंड इफ यू सी ना द टीम दे आर, मतलब वो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाता है कि ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इट्स टाइम यू मूव टू अदर कंपनीज, अदर स्टार्टअप, राइट. That's on you, right? You have to be selfish in this term कि हाँ मैं यहाँ पे घुसा हूँ, if I can prove my value, ठीक है, by working, they are definitely going to pay you, ठीक है ना. एक अगर स्टार्टअप टीम होता है वो डेफिनेटली आपको पे करेगी अगर वो आपको आपके काम में वैल्यू देखती है, ठीक है. बट अगर वेट करते हो कि नहीं मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब आई वोंट बी ज्वाइनिंग ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग थिंग हियर, वो कि भाई आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा एक नाम ऐड हो सकता था, ठीक है. तब जब आप बोलते हो ना कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, मैंने इतने सारे स्टार्टअप में काम किया, तो ट्रस्ट मी, फॉर एग्जांपल आपने 10 कंपनी का आपने दिखाया कि मैंने इतने सारे कंपनी में काम किया, 11वां कंपनी होगा ना, मे बी वो 11वां कंपनी आपको 1 लाख तक दे सकता है, ठीक है, और दे कैन लाइक गिव यू मे बी इवन मोर, कि दे आर नॉट गोइंग टू सी कि आपने बाकी जो प्रीवियस 10 कंपनी में कितना कमाया, नहीं देखेंगे वो लोग, देखेंगे कि आपने कितने सारे काम मतलब कंपनी में काम किया है, आपने कितने लोगों को आप जानते हैं, उनके साथ में काम किया है. ऑल्सो इस चीज को हम लोग इजी बना रहे हैं थ्रू फ्यूलर. यहाँ पे फ्यूलर में एक सेक्शन है कोलैबोरेशन, ओके, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर अभी आप मेरे से मीटिंग कर रहे हो, तो आपने अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आया हो लाइक मतलब आई वांट टू सी कि इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया होगा आज तक, ठीक है. सो फ्यूलर मेक्स इट इजी. तो यू कैन से हमने फ्यूलर में एक अलग एक सेक्शन ही बना दिया जहां पे यू कैन एक्चुअली ब्रैग अबाउट योरसेल्फ, यू नो, यू कैन एक्चुअली सेल योरसेल्फ कि हाँ देखो मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, आई एम अ टीम प्लेयर. सो व्हेन आई एम मतलब मैं बता रहा हूँ किसी को क्या है मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट में काम किया, तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट फॉर यू, ठीक है ना, रादर देन सेइंग कि मैंने आज तक किसी के साथ काम ही नहीं किया. लाइक इट इंक्रीजेस योर ऑड ऑफ गेटिंग इन समवेयर, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमने देखा कि लाइक इसको भी एक इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है ना. सो हम फ्यूलर में उसको अलग एक सेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे यू कैन एक्चुअली find a person and see their collaboration कि उन्होंने कितने सारे collaboration, उन्होंने कितने सारे प्रोजेक्ट में collaborate किए. So in that way you can trust that person. Also it increases your chance of getting reply from them, because अगर आप उनका कोई काम उठा के उसको अगर पूछते हो कि like hey मैंने आपका ये काम देखा, आपने ये प्रोजेक्ट में किया, तो that way that person is like will give you reply, you know, they are very serious, they are like कि हाँ भाई इसने मेरे बारे में रिसर्च किया है, you know, so they are also happy. Okay, so like this is a hack I would say, ठीक है ना. तो ये 4 चीज मैं एटलीस्ट बोलूंगा. 4th वाला तो बोनस था, और पहला चीज तो आई होप यू लर्न फ्रॉम दैट, यू नो, ठीक है. Here I learn thing. The first one is proof of work,
plus नहीं, book. experience. First is book. Proof of work plus experience. When you collaborate or expensive, since you are working for free and getting experience, this is the main thing. Yes, कोई ये भी है आपका अगर एटलीस्ट, क्योंकि आपको रेज्यूमे खोने या के लिए नहीं है ना, पोर्टफोलियो पे आपका मतलब देखता है. यस आपको स्टार्टिंग में खोने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है, लाइक दिस इज समथिंग लॉट ऑफ इंडिविजुअल मेस्ड अप, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब इंटर्नशिप शुड बी पेड एंड ऑल, ये सब में वो लोग फंस जाते हैं. अरे हाँ, यस ऑब्वियसली इंटर्नशिप शुड बी पेड एट सम पॉइंट, यू विल गेट पेड, ओके, वो मिलेगा आपको, बट एटलीस्ट यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव ना, कि हम क्या मैं कुछ ऐड वैल्यूएट कर पा रहा हूँ, ओके, अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो डोंट वरी, यू विल बी लाइक यू आर गेटिंग पेड. और हमारे केस में जितने लोग भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे एज ए एक्सटर्नशिप, ठीक है, वो लोग सब लोग वो अल्टीमेटली इंटर्नशिप में कन्वर्ट हो गए, यू नो, एंड द सेम रीजन आई टोल्ड, एंड दिस इज समथिंग लाइक कॉमन फॉर एवरी अदर स्टार्टअप्स एंड कंपनीज, ठीक है ना, जहाँ पे वो होता है, ओके. एंड एज आई टोल्ड, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, आप सीख पाते हो बहुत जल्दी. when you are in a say for example एक established team के meeting, टीम के डिस्कशन में आप जब बैठ के सुनते हो ना, so the discussion is something else in different level, ठीक है. so just imagine ना कि what you are losing here, आपको ना ही कुछ बिल पे करना, ना ही कुछ करना, एटलीस्ट इस एज में, ठीक है ना, मतलब when you are in college, ठीक है, बहुत को ऐसा नहीं होता है. most of the time like you can actually pay your मतलब क्या मतलब you can actually spend your time there, ठीक है ना, आपको खोने के लिए कुछ नहीं होता है most of the cases में, right. तो आई गेस ये एक बहुत बड़ा हैक है. एवरी स्टूडेंट शुड लाइक टेक इट मोर, यू नो, लाइक एग्रेसिवली और से ओके. चलो ओके, फिर थैंक यू हर्ष. Thank you for watching the complete video you have at the end. I hope you have learned something. This video is really insightful for you as well as for me. If you are interested in me, if you found something useful, just let me know in my Twitter profile, which is @HeyHarshu. Tell me what changes I have to make, what improvement I can do. I am really open for every positive criticism, advices, tips, whatever you want to share with me. I am really open. My DMs are really open for you. Come up, do share it with me. And don't forget to share a screenshot of this podcast into Twitter and do tag me as well. And if you got any value, just take a screenshot of any part of this video and share on Twitter. Put the link of my video and do share that value to everyone, because Twitter is now have a lot of potential to build someone, and it's time to come up and build your own profile. Thank you for watching this video. I am Mishra and I am signing off.